I should start. Yes. Yes, friends. So, a warm good evening to all of you. And before we move ahead with the session, I would request the technical team to play the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते अस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, the technical team. So, we have with us CA Saurabh Ajmeraji, the chairman of WIRC, joining with us directly from Japan. CA Rakesh Shahji, treasurer. CA Bishan Shah, secretary. CA Aamir ji, the faculty for the evening, and CA Harsh Bhanushali ji, the coordinator for this session. Now, before I further do, I would request CA Rakesh Shahji to have his words of wisdom. Thank you, Fanil Bhai. Unfortunately, I cannot on my camera because of some technical issue. Good afternoon, everyone. Good evening, friends. Welcome to you all this in 2 hours webinar on interesting topic of workflow chaos to AI clarity. And thank you, Aamir Bhai, for agreeing to taking this session. We all know we as a profession, we are going into a big, one of the biggest transformation. Our role now is not only limited to compliance and reporting, but everyone is expecting immediate output, turnaround, and value-added services. So though the AI is a new thing, but definitely this is not going to replace us as a chartered accountant profession, but also it is going to help us to achieve the objective of a faster turnaround, as well as creating a more efficient environment and help us to become analytical professionals. Welcome you, Aamir Bhai, and wish you everyone a happy learning. Thank you very much. Back to you, Fanil Bhai. Thank you, Rakesh Bhai, for setting a right tone. And as per protocol, generally the chairman speaks the last before the introduction. But as chairman sir has joined from airport, so we are just deviating from the protocol, and I would request chairman sir to have his words of wisdom. And thank you, sir, for joining from an RRC at Japan. Thank you, Fanil Bhai, the architect of this wonderful program, where we are discussing that how we can use AI practically in our offices and how we can manage the workflow with AI clarity. So it is really a wonderful webinar for all our members. My compliment to Fanil Bhai, and I want to recognize the presence of Dynamic Secretary CA Bishan Shah, WIRC, and then Rakesh Shah. We already heard that he is the treasurer of WIRC. Friends, this year we are targeting more and more such webinar to empower all our members all across the fraternity, and it gives me immense pleasure to welcome you all in another exciting program where we
about workflow choice to AI clarity, a practical masterclass for chartered accountants. Today, I can say the profession is standing at a transformational point where technology is not replacing professionals but empowering professionals who are ready to adapt. So, whenever we are thinking about that AI will replace the chartered accountant or professional, we have to understand it will replace those chartered accountant or professional those are not adopting the AI and technology, which is need of the hour. And artificial intelligence, automation, and smart workflows are no longer future concept. I can personally feel that because now I can see that 90% of the chartered accountant are using some of another tool on AI, and which is really important. And we are leading from front for the AI part, and the main who has designed this program also known for the AI. And the similar way, our institute is already trained more than 40,000 chartered accountants through AI level 1, level 2 batches, which we are doing regularly. And I'm very happy to say that in the July month, we at WRC are hosting 800 batch of AICA level, and you can understand the quantum of the work we are doing from that we are already reached to announcement of 800 batch on AI level 1. And still I can feel the demand which is used in terms of participation from each and every corner of our profession. So my request would be to each one of you those who have joined, please adopt AI in day-to-day working, because it is really a need of the hour and it can definitely empower all of us in a different way. Friends, this year at WRC, we are also using AI technology at the best, and we are planning all our event well in advance. And today, I like to announce that we have already announced our regional conference that we are hosting on 4th and 5th December at a larger landscape, again at a Geo Convention Center, where we have more than 3,000 members, and I can see the enthusiasm amongst the members. Those are really look upon such type of programs. So my request to each one of you, please participate of the in our signature program, that is our regional conference. Friends, today also I am on the international study tour at Japan, where 45 members from our fraternity had joined, and we are getting benefit in terms of networking engagement. And definitely in upcoming 7 to 8 days we will learn that how Japan is more proactive in compared to us, and how we can have a disciplined approach like that. These will be definitely taken care. So our we at WRC, I can say, empowering all our members, accelerating our profession in a different way in this year. In last 93 days of chairmanship, we have already conducted more than 70 programs on a different note. And I can say that this time we are targeting to have more and more training program, because we believe that our professional, because we generally believe that our professional delivery is required more in an efficient way, because the stakeholders expectation is altogether different. They are looking upon us on a trust partner, and that is why we need to empower ourselves in terms of professional delivery. Recently we had a program on valuation and business modeling, a wonderful workshop in which also we have provided a wonderful opportunity to all our chartered accountant in terms of hands-on experience. Now we are planning some of the program which is specifically related to the industry, because I generally believe that this is the biggest problem statement of our profession, that we have 70% and above population in the industry, and from where we generally have very less interaction, and that is really need to be taken care. And that is why this year we have targeted so many programs specifically for the industries. In this series we have done CXO roundtable, in which more than 200 members from industry were participating, again on a larger landscape, that is Geo Convention Center. Again, we are moving for a wonderful program in terms of AIF and family offices. We are doing the wealth conference again on 13 June at Geo Convention Center, because if you can see the kind of quantum which we are taking care and the kind of
empowerment we are taking care in terms of innovating our programs also. You can feel our energy, and definitely we are looking forward to participation from each one of you. I'll not take much of time because I know that today we all are gathered to hear our learned speaker, and definitely we'll have a great understanding from Aamir Dholia ji. My compliment to Aamir bhai for joining as a speaker. And I like to hand over once again to CA Dr. Fenil Shah. Thank you. Thank you, Saurabh ji. And we can understand the zeal and enthusiasm with which you're working and the way we are having the conferences. I think so in the times to come, we will also have a WRC hall in Geo Convention, then it would not be something wrong. And thank you, sir, again from joining to a webinar also from this Japan. And very happy to see the participation just now to touch near to 150 also. So before I request Vishen Bhai to give a formal introduction, I would like to take a minute to tell and set the flow of this particular session which we wanted to have. When normally, friends, when you attend any type of conference on or session on AI, we try to focus on tools, right? But here, the speaker is going to share with you various techniques which will help you to become one of the biggest professional to implement AI. And normally, when you learn a tool, you always think that हमने ये tool तो सीखा, पर उसको implement कहाँ पे करें? So today's session is not just about one tool, but it is about designing the whole workflow. That how from any task, starting from step A to step Z, how we can implement this particular artificial intelligence technology. And informally, I can say that why Amirji, then I know him since he was a student. When even he was a student, he was creating mind maps that created an impression on my mind. And specifically, normally we have a speaker, right, who uses AI into his professional life. But today, WRS is privileged enough that we are having a speaker who is a chartered accountant, not only a chartered accountant, but a CA developer, because he has curated one whole application on his own with the help of his team, which can help all of us to automate our things. And before that, I would also request that tomorrow also we are having a wonderful webinar on same tone, because if we use AI haphazardly, will get into the clutches of DPDP Act, and somewhere confidentiality and integrity will not be maintained. So tomorrow we are having a webinar where we will learn that in the advent of using AI to the best possible manner, which are the precautions to be taken, which are the guardrails to be kept, which are the actions to be taken, so that in the view of convenience, we don't miss out on compliance. So tomorrow we are going to have a webinar on AI and DPDP. With this, again, I thank Saurabh Ajmeraji for posing a trust on the WRC committee and giving us an opportunity to have this particular webinar. And now I request the vibrant secretary of WRC, CA Bishan Shahji, to formally have his words and also take the task of formally introducing the faculty. Thank you very much, Fanil Bhai. At the outset, this is the 75th year of the WRC, and we have our impactful chairman who is always there for all of us, who believes in inclusiveness and I can say innovation. And with his vision, we are able to form, plan, and execute such type of wonderful, innovative programs. As rightly said by Fanil Bhai, that now we need one geo hall uh, of WRC. So many programs under his leadership we are organizing there. So kudos to our chairman, C.S. Saurabh Ajmera ji. Yes, we are celebrating this 75th year under his visionary leadership. Again, treasurer of the WRC, C. Rakesh Shah ji, who is there today and also face technological issues because he is not able to start his camera. But he used the technology in a way that his photo is available to everyone, each participants. Again, our past treasurer and regional council member, chairman of this committee, CA Dr. Fanil Shah, who always try to make available himself to the members and try that how we can disseminate AI programs. So my congratulations to
Fanil bhai, to have this, I guess, first program of your committee virtually. So let us have more and more programs so far as the AI is concerned, because we need to understand. And very rightly, you chose the title of the program as well, because chaos of the workflow. But with the AI, we can be able to do the work smartly, as there are so many tools available so far as the workflow is concerned. Say make.com, Zapier, N18, so many tools are available. Same way, when there was a Yudh of Mahabharat, and Kauravas are having so many tools available with them, but Pandavas were knowing which tool where to use. And that's how I can say, with our learned faculties in-depth knowledge and his vision, I can say we members will be benefited today in this topic of uh, workflow automation, because where to use connector, where to use uh, hooks, and all those things will be very much of importance, and it will make us smart as well. So I recognize the presence of our immediate past vice chairman CA Piyush Chandak ji, and vice chairman of these AI committee here, and yes, coordinator of the day CA Harsh ji, who will take care of the coordination. So, with these words, I again welcome you all. And as rightly introduced by Fenil Bhai, today's learned faculty, that uh, Aamir Bhai is in this ecosystem since long. He doesn't require any formal introduction. Mishra ji, if you can play a slide of his introduction. Yes. So he's a chartered accountant and founder of Simplified, a workflow clarity platform for the professional firms. He is specialized in AI-enabled practice transformation, again, workflows, and with his visionary words, I am pretty sure that our workflows will be much more smoother. With these words, I again welcome each one of you, and let's try to work more on the workflow smartly and swiftly. Over to you, Fanil Bhai. Thank you, Vishen Bhai. And as always, you try to merge the spirituality with technology. Today, introducing and blending the Mahabharata concepts with AI workflow. So I think so. This is a right pitch being set perfectly. So now with this, would request Sia Aamir Dholia ji, the faculty, to take on the session. And at the end also, we will have Piyush Bhai also to share his closing remarks, and Harsh ji then to give a vote of thanks. Thank you. Over to Aamir ji. Thank you, sir. Very good evening, everybody, and Eid Mubarak also to those celebrating. And now, a festive evening is usually actually not the easiest time to attend a session, but all those who are attending, I genuinely appreciate your presence. Before I begin, I would be feeling in my duties to thank Saurabh ji, who has given me the opportunity, along with Fenil sir, who has been on every step of the way with me, right from my studies during CA final to becoming a chartered, and after that also. So thank you, sir. Piyush ji, Rakesh ji, Vishan ji, the whole WRC team, thank you so much for organizing such a wonderful event. And I'm sure something will be taken out of this session at the end. Now, one thing which I'll note over here is, as Bishanji pointed out, that Pandavas knew which tool to use, when to use, where to use. That is very important, sir. Because in today's world, we are surrounded by so many things and we are getting influenced also very easily. That this is good, this is nice, let's subscribe, it will help. But what happens is, after a few weeks or a month, we end up putting it out in a trash and forgetting it. And then again, another tool. But today I'm going to show you something different. Not a tool,
but a roadmap which you can walk on, run on, and fly on. Okay. Now, before I start, I will make one promise to everybody that this will not be a session where I will be pasting prompts and giving you outputs, but today we are going to talk something deeper. That is how to make professional work move with clarity, responsibility, and control. Because in a CA office, good intention is not enough. Good work needs good system. Let me just share my screen before I start. Share my screen. Yes, just a second. Is this? Is it visible, everybody? Okay. Yes. Okay. Now, most of you already know how to get answers from AI. You can ask ChatGPT to draft an email. You can ask Claude to summarize a document, or you can even ask Gemini to explain a concept, or even Copilot during your office work. But today I want to discuss something beyond prompts. Because in a C office, an answer is not the same as completed work. Now, getting an answer from AI is becoming very easy. But the bigger question is where time actually disappears inside our office. Now, think about it. When was the last time that some work got delayed in your office? Was it delayed because nobody knew how to do the work? Usually, no. It was delayed somewhere between client and staff, between preparation and review, between the review note and correction, or between client query and client reply, or between filing and saving the acknowledgement, or between completion or the billing. That space between work where time quietly disappears. Let me make this painfully practical with a situation which every CA office will recognize. The client has sent the document, the staff member has seen it, the partner has asked for the status, the deadline is also known, still the work gets delayed. Why? Not because people are careless, not because the office does not have tools, not because AI is missing. Well, actually, it happens because the work is not moving through a designed workflow. It is moving through WhatsApp, your emails, Excel, your supercharged memory, and your assumptions. Now, instead of assuming the problem, let us diagnose where work actually gets stuck in your own office. Now, if you can use your chats, if you can see on the screen, where does work get stuck most often? There are a few situations given on the screen. If you could answer with the count over here, I can just move around with my cursor. Is it in, okay, it is in presentation mode, so I cannot see the chat. If I can see the chat, where is the chat? Chat, I hear the chat. Okay, if everybody can answer me, where your work mostly gets stuck in your office. Client clarifications, okay. Somebody might even ask that what if all of these are happening in my office? Well, that is common. But for implementation, let's start with one blockage. And the worst mistake, people do is trying to automate everything at once. Okay, client clarification, client, okay. Nice, okay. So people have issues and time is running out and things get stuck.
Okay, now just a second, I'll just put this aside. Now, okay. Now, whether your answer is documents, review, approval, or closure, the root issue is usually the same. One piece of work is living in too many places. One work lives in 5 places actually. The message is on WhatsApp, the document is in your email or Drive, the due date is in Excel or your Google Sheets, the review note is verbal कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है or in your WhatsApp audios, and the real status is in someone's memory. Now imagine adding AI to all of this. Where will AI sit and help you? In your WhatsApp, in your email, in your Excel, or in your memory? That is why I say prompts are not enough. And this is why AI cannot become the main system of the office. AI no doubt can help. Only work itself has a clear place to move. Now, when I was showing this presentation to my friend, he asked me a question that we are already using Excel trackers. क्या ये काफी नहीं है? Well, I told him that Excel is useful, no doubt about it. Even I use it. But Excel usually tracks status. It does not automatically connect files, your comments, your reminders, your review notes, the approvals, the closure trails. So all that is missing in Excel. Then again, he asked me a question that can AI read all these places together, which I just mentioned? Well, technically, integrations can help. But before integrations, the workflow must be structured. Otherwise, AI reads scattered confusion. Now, this is the frame which I want to set for the whole session. AI is not your office operating system. Your workflow is the operating system. AI is just an assistant in that system. And if your system is broken, your assistant becomes very confused. And if the workflow is super clear, the assistant becomes very powerful. So today, we are not going to ask which AI tool should I use. We will ask how should work move in a CA office in the AI era. So we are not going to collect prompts today. We are going to understand how to build an AI ready office. That means 3 things. First, the work should move clearly. Second, AI should assist at the right stages. And third, human review and professional control should remain non-negotiable. Because a CA firm does not need AI excitement. It needs AI discipline. Now that we have the frame over here, let us just divert this topic a bit and look at one of the most successful workflow redesign stories in the modern business. It is not from technology, not from accounting, but from a kitchen. Yes, you heard me right, from a kitchen. To answer that, I'll show you something really interesting. Just a second, what happened to my slide? Okay, the hidden architect of fast work. Okay, just a second, my screen is hanged. Okay, yes. So let us not talk about ChatGPT for the next few minutes because the best business in the world did not become efficient by buying tools. They became efficient by redesigning the movement of material, information, decisions, responsibility. Now, CA office is no different. A file also moves, a notice also moves, a query also moves, a client document also moves. So before we ask how AI can help, we must ask how work does move. Okay. Think of McDonald's.
a name which you have heard and which your kids also must have heard. The lesson is not burgers today, the lesson is movement. In 1948, McDonnell Brothers streamlined their operations and introduced what became known as the speedy service system. The point was not to cook fast, the point was to make the process repeatable. A limited menu, clear stations, defined movement, same output again and again and again. So before I talk much, let me show you the chaos which they turned into a workflow which they call the speedy service system. So let me just show you for a second. Here it is. Okay, I'm playing it and you'll enjoy it. You were going to love how we did it, Dick. You got to tell him. Tennis court? Okay. He brings me out to this tennis court and he's drawn this line, the exact dimensions of our kitchen. Sink on the right, extruder on the left, bagging and hood. Hood. Okay, garnish garnish. This is burger finish. Got it. And then this is burger slide. Or we could just move those. Okay, multi-mixer soft drinks. Okay. We bring out our whole staff and we have them go through the motions, making pretend burgers and fries. All right, Steve, anticipate that. You gotta keep the tray level. Okay, Dick is running around with this stick, marking where all the equipment should be. tuck in. Tony, are you gonna skip the pickles when we're really doing it? They do it over and over, hashing it out, choreographing it like some crazy burger ballet. Going on over there? Yes. No. No. Everybody stop. Garnish one, garnish two. You've got pickles, you've got onions. It's a goddamn hamburger. Come on, clear off. Let's clear it off. It's time for the pink chalk. And then rip your orange. See all this open space here now? We've rearranged the fry situation. So now the stage left, the deep fryer stage right. Again, that's great. Come on, guys. They're pretty tied up here. Yeah, watch it, Lazy Susan. It's the timing of the Lazy Susan. Those are finished burgers. You can't hold it. I still think there's a third version. What do you want to move? I want to move everything. Back to stage left, please. Got our old drawing. This is better. Doing all right? Think so. I guess, look, let's assume our balance. Finally, after about 6 hours of this, we get it just right. It's a symphony of efficiency, not a waste of motion. Feel good about those pickles. Catch up. Use your Lazy Susan. You're back into it, Seth. And pickles and pickle and mustard. We take the layout to a builder, custom build the kitchen to our exact specs. Ta-da, the Speedy system is born, the world's first ever system to deliver food fast. It is totally revolutionary. So, a thing to learn from here is now McDonald's, the brothers spent a lot of time redesigning the movement. हमको burgers नहीं बनाने ऑफिस में. I'm not telling कि ये staff को यहाँ बिठाओ वहाँ बिठाओ. That is not what I'm trying to say. कि we also have a process in our office and we need to sit down and understand the existing workflow and how it can be made better. Because if we are wasting time not growing, that means something is going wrong. So for that we need to sit down. वो time निकालना, बैठ के सोचना, a very simple thing, but which we fail to do it. Another example, which I had a few months back when I was not feeling well. So one of our seniors, who is an yoga expert, told me कि भाई 5 मिनट साइड में रह के सिर्फ सांस ले.
Sounds very simple, but I don't do it. बट ऐसी चीजें हैं हमारी ऑफिस में जो बहुत सिंपल है बट हम नहीं करते हैं। तो आज वो सिंपल चीजें मैं एआई के मुंह से बुलवाऊंगा आज, ताकि आप जल्दी समझो। एज दे से कि डॉक्टर ने कहा है तो हम मानते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड एआई बोल रहा है तो शायद हम मान लेंगे जल्दी। सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दैट वे टुडे। नाउ इमेजिन इफ देयर किचन Now imagine if their kitchen worked like many professional offices. So one person knows where the bun is, one person remembers the order, one person verbally tells the next person what to do, one person checks the quality only if someone asks, and the customer keeps asking, is my order ready? Now, this situation will never scale, and yet many CE offices operate exactly like this. Some people even ask me, ki, what is this kitchen in CE office? So I'll ask you also, in your office, what is your kitchen? Is it your GST filing? Is it your audit? Is it the notice reply, document collection, client onboarding? What is the kitchen in your office? If you can reply in the chat. Okay, as you reply, let me continue. Okay, we have some replies. Now, yes, thank you. Thank you. Yes. Cool. A lot of replies we have. Okay. Now, before I talk much, let me show you the effort which those brothers did and how it turned out and how the workflow was improved and people got impressed. And the whole story, which I'm, just sharing the link later on in the chat, which you can see for a weekend watch if you want to. A beautiful movie, which I really love. It was on Netflix earlier, but I don't know why they took it out. But it is on YouTube for free. It's just a minute video, which I would like you to see how they turned their existing disturbed or chaotic workflow into a beautiful workflow. Little tour. Yeah, I was. Hey guys, planners. Interesting. Thank you. Back. Stop drinking, to drive. Have a sweet up. Anything else for you to chase up? You are. Speed, that's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill. Manned by two folks whose sole job it is to grill all beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the funds ready. Watch out. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Every McDonald's burger has two pickles, pinch of onions, and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them? Yes, that's the kitchen is. Next, this is the finishing station where we put the whole thing together. And voila, a fresh, delicious burger from grill to counter in 30 seconds. Now replace the burgers with your CA work in your office, and you'll know what I'm trying to say. Every work in our office also has stations. The client data must arrive, documents must be checked, return must be prepared, mismatch must be reviewed, client query must be solved, return must be filed, acknowledgement must be saved, and task must be closed. The problem is not that CAs do not know this. The problem is that in many offices, the flow is not visible. It is understood mentally, but not designed operationally. And if the flow is not visible, AI, it cannot reliably assist in it.
Now, a CE office does not need more people shouting, "Hey, bhai, urgent hai, jaldi karo." It needs clear stations. Now, once we see work as stations, we can also see where once we see work as stations, we can also see where waste is hiding. Yes, you heard me right, waste. If you have heard of the company Toyota, it is famously known for its lean concept, where they try to reduce waste to next to minimal zero. So, Toyota's production thinking is built around eliminating waste and shortening lead times. Now, Toyota describes the production system as a way to eliminate waste and make work easier and more efficient. But in a CA office, waste does not look like unused raw materials. It looks like this: searching for the latest Excel file, for those templates, waiting for client documents, waiting for partner review. Like I'm sitting here, somebody might be waiting for me, following up again for the same information, reworking because earlier brief was incomplete. This has happened many times. कुछ बोला कुछ और करके आया. And another thing is preparing a reply again because the comments were verbal. Now, the hidden waste of professional offices is this. And this is where AI aware C offices can go much deeper. Not can AI draft this, but where is the waste inside the workflow? Just a second. And the biggest reason this waste survives is that many firms still depend on the memory. Yes. हम सब चाचा चौधरी बन के बैठे हैं यहाँ पे, सब कुछ हमारे दिमाग में है कि कल क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, किसको मिलना, क्या करना. So we have turned our memory into a control system. If I could, give another example in surgeries. In surgeries, even expert teams use checklists. Now, as per WHO, the use of surgical safety checklist reduced surgery-related deaths and complications by about 1/3 in the trials across 8 cities. Now, the lesson is not medical, the lesson is professional. Experts use checklist not because they are juniors. Well, experts use checklist because pressure makes human skip steps. So when a CE office says कि हमारे स्टाफ को भाई पूरा प्रोसेस पता है, that is actually not a control. And when a partner says, I remember the review point, that is not a system. Memory, no doubt, is helpful, but memory is not a control system. So now we change the question over here. The beginner question is, can AI do this? But the professional question is, where should AI enter the workflow? And where must human control remain? That is what we will do now. We will take a CE office workflow and break it open. Okay, so let's move from the stories to your office. Let us map how work actually travels inside a CE office. To understand this clearly, let us break a CA firm into a 3 memory stages. Now, everyone would be able to relate to this. Every CA firm starts with a very natural operating system, that is their partner's memory. In the early years, this works beautifully. You know the clients, you know the pending work, you know who is handling what, you know which deadline is coming, you know which client is difficult, you know which staff member is reliable. Now, with a 2 or 3 staff members and limited client list, WhatsApp, Excel, and memory are not a bad system.
They are practical systems. But after a few years, the same system starts to show cracks. More clients, more staff, more partners, deadlines, follow ups, incomplete information. Now, more work that someone knows, but the firm does not know. This is the scaling wall. The system that help you start the firm can become the system that limits your growth. So, before we discuss AI again, let us first understand how work actually enters a CA office at different stages. The stage one is that the partner remembers with a small team. The stage two is that the team remembers. The stage three is that the firm must remember. Now, normally, a work which enters our office is not through a formal channel. It comes through a WhatsApp message, a call, a social meeting, a gathering somewhere, और वहीं से शुरुआत होती है. And we have even existing work which we need to focus on. So these are the entry points which a normally C office has. Now, new work almost never enters the firm as a clean task. It does not come like भाई चलो create task करो, select client करो, due date add करो, assign owner करो, document attach करो, checklist डाल दो. वो ऐसे नहीं आता है काम हमारी ऑफिस में. वो कैसे आता है? Let me again reiterate. It comes when a client needs something very urgently, कि मुझे urgently एक CA में रिपोर्ट चाहिए, मुझे कोई लिमिट करवानी है, कोई नोटिस आ जाती है व्हाट्सएप पे, प्लीज चेक दिस. किसी की फाइल सॉरी अपील आती है, वी नीड टू फाइल दैट. कोई क्लाइंट बोलते हैं कल मुझे प्रॉफिट शीट चाहिए, मुझे टैक्सेशन का चेक करना है. सो दिस इज हाउ वर्क कम्स इन आवर ऑफिस. एंड यूजुअली द पार्टनर गिव्स ग्रीन सिग्नल वर्बली through WhatsApp or through a quick call. This is very normal. But the problem is not informal entry. The problem is invisible continuation. Work अंदर तो आ गया informally, but after it enters, the firm must convert it into a visible work. So the practical question is not whether WhatsApp should disappear. The question is where the conversation happens. ये सेम चीज़ है ना. व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद माय पार्टनर, तो मुझे बोला कि तो क्या हम बंद कर दें ये बातचीत करना क्लाइंट से? तो माय आंसर इज नो. वर्बल इंस्ट्रक्शंस तो आने ही वाले हैं और आते ही रहेंगे, बट मीटिंग्स, कॉल्स एंड व्हाट्सएप, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू. The improvement is not to stop natural communication. The improvement is to convert the important instructions into structured work before they get lost. How to do it? Let's see. As I just showed you, work comes informally and it should be structured. Now, one daily ritual which you should do. One daily ritual. And that should be a firm memory ritual, not your personal ritual. At the end of the day, the firm captures what came in and what got stuck. Partner के inputs, staff के updates, new referrals, client follow-ups, review कोई pending है, कोई closure meeting है. This does not need to be a 1 hour meeting. This can be a 10-minute discipline. And the output should be very simple. ये मीटिंग के बाद एक लिस्ट बन जानी चाहिए कि क्या नया काम करना है, कौन सा काम अटका हुआ है, कौन सा हाई रिस्क है, कल क्या करना है, कौन सी चीज पार्टनर को देखनी चाहिए. ये चीज है ना, यहाँ पे एआई हेल्प करेगा अपने को. लेट मी शो यू हाउ. ओके, लेट अस रन अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. I'll give you a situation in your chat. Let me just copy and paste it in the chat for you. Just a second. Let's copy it over here. Chat.
प्रेजेंटेशन मोड में दिखता भी नहीं है कुछ कुछ चीजें. Yes. So everybody, I'm pasting a dump over here on the chat. ये एक normal सी चीज है which you can read. I have given some rough situations in front of you, which normally happens with our office. That, let me just read out for the first situation for you. Now, partner A met a client at bank. Just a second. Now, partner A met a client at bank. The client wants project report and CMA data for 2 crore term loan. Now, the bank wants document by Monday. Situation ऐसी होती है हमारे उसमें. Existing audit client sent fixed asset invoice, bank statement to staff. और डेप्रिसिएशन का वर्किंग चाहिए, वो पेंडिंग है. एंड ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है विच आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू. नाउ व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज, नाउ एक और चीज मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूं, सो आई डोंट नीड टू चेंज द स्लाइड्स अगेन एंड अगेन. आ गया. Here it is. Okay. इस मीटिंग में आ जाता है. Okay. Here we are. Set right. Yes. Okay. If you can see from the dump which I've given you in the chat, notice how realistic it is. कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें एग्जिस्टिंग वर्क वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो पार्टनर के डिसीजंस चाहिए उसमें, कुछ चीज़ों में स्टाफ कर सकते हैं, कुछ काम रिस्की है, कुछ चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आ रही है. सम हैव मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, सम नीड्स क्लाइंट फॉलोअप, सम नीड्स क्लोजर प्रूफ. ये कोई नॉर्मल GSTR 1 वाला एग्जाम्पल नहीं है. नाउ दिस इज व्हाट अ ग्रोइंग फर्म एक्चुअली लुक्स लाइक एट द एंड ऑफ अ बिजी डे. Now we will use AI not to give tax advice over here, not to decide the matter, not to replace the partner also. We will use AI to convert this rough dump into a firm memory. So let us give AI the right role, not the tax expert role, not the decision maker, but a firm memory assistant. So I would request everyone to, fire up their Chat GPT, Claude, Gemini, whichever you like, and just paste the dump along with the prompt. And once you are done, just share the link of the chat over here so I can just open up and show it to everybody. I'll just select one or two from the chat randomly. Where's the chat? चलो मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूँ. मैं तो ट्राई कर चुका हूँ फिर भी. I'll just show you. Okay, everybody get going. The first practical today. I've given you a rough dump and a prompt also. Blindly copy paste मत कर देना, एक बार पढ़ना. Dump not received in chat. Please share the content dump. अच्छा, चैट में रिसीव नहीं हुआ. चैट में रिसीव नहीं हुआ तो हाउ कैन एल्स वी शेयर. मेरी चैट में तो दिख रहा है यहाँ पे, आपको मिला नहीं. लेट मी ट्राई वंस अगेन. कहाँ गया चैट. Let me just type again. Now, did you get it, everybody?
Share with everyone. Acha, okay. Share with everyone. Okay, got it, got it. Okay. Now everybody must have got it. Okay. So I'll just show you in my browser also what I got. आप भी try करो. Once the dump, I'll give you, let's say 30 seconds. AI ने normally कितना, मेरे तो 20 सेकंड ली थी, वो 30 देता हूँ. The objective over here is to show you कि ये काम हर रोज होता है हमारे ऑफिस में. हमारे ग्रुप भी होता है टू डूज का या पेंडिंग वर्क का, और उसमें ना पूरा डंप कर देते हैं. बट एंड ऑफ द डे the dump stays a dump, and next day we again refer the dump and start our day. But that is not the right way to do it, as the days goes by and the work starts to increasing. बाद में क्रैक हो जाएगी फिर. तो लेट अस यहाँ पे एआई एक बार ट्राई करेगा दिखाने की हमको द मिरर कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है. सो आई एम वेटिंग फॉर somebody टू शेयर अ लिंक. वो जब तक करते तब तक आई शेयर माई रिस्पॉन्स ओवर हियर. जस्ट क्लोज दिस. यस. ओके. आप मुझे शेयर करना आपके लिंक. सो ओवर हियर व्हाट चैट जीपीटी हैज शेयर्ड मी इन अ टैबुलर फॉर्मेट कि ये पूरा डंप में से न्यू वर्क क्या है, एग्जिस्टिंग वर्क क्या है. अजम्पशंस मार्क कर दिए मेरे को यहाँ पे पहले से ही. न्यू वर्क रिक्वायरिंग पार्टनर डिसीजंस, एग्जिस्टिंग वर्क स्टक और डिलेड, ये भी आ गए यहाँ पे. हाई रिस्क मैटर्स. नाइस. हिमांशु ने भी शेयर किया है. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. But one thing is there, when the AI output appears, do not admire the formatting. Inspect the usefulness. A good output should immediately show, which work needs partner decisions, which existing work is stuck, which are high risk items. कितनी चीजें समझ में शायद नहीं आ रही है. What should happen tomorrow? Which client follow-ups can be sent? Where is closure proof missing? अभी ये डिफरेंस है. सेम अनेबल टू कॉपी, अनेबल टू सी, बहुत सारे लोग ने तो किया है. हम्म. So this is the difference between AI as a writing tool and AI as an operating assistant. A writing tool gives you text, but an operating assistant gives you clarity for action. अब यही चीज को वापस हम कनेक्ट करेंगे to the real scaling problem of which I call, just a second, where it is. Yes. If anybody can relate to this, a firm having multiple partners, यहाँ पे आपको मजा आएगा. स्पेशली जिस फर्म में ज्यादा पार्टनर्स होते हैं. One partner may know about a project finance lead, but other partner may not know, or another partner may know about litigation deadline. A staff member may know about a client follow-up, and another team member knows that document is pending. But the client does not see partner A, partner B, staff A or staff B separately. उसके लिए तो firm है. They know you by the firm. So if one partner knows but the firm does not know, the work is still at risk. This is why growing firms need firm memory, not to control people, but to protect service quality, review discipline, and client experience. So let us separate what AI can realistically help with and what it should never own. एक और चीज करते हैं हम. और चीज करते हैं. यस. आ गया. यस. व्हाट्सएप के थ्रू काम आएगा, बट इट कैन नॉट बी द ऑफिस. यस. हाँ. I'll directly take you to the next demo over here, which is
Going to be very interesting. We'll do another practical exercise over here in which you keep your Excel or Notepad open, and we will not use real client data. We'll use dummy data from the previous slide. Now your job is very simple. We will split the day into two lists. List A, new work requiring partner decisions, and list B, existing work requiring action. Now this is how we begin simplifying workflow chaos, not by creating 100 tasks, but first understanding what kind of attention each item needs. Let us give AI a very specific role over here, not a tax advisor, not an auditor, but a workflow classifier. Let me just share it with you, and I'll connect the dots very soon in this. हाँ, कैरेक्टर ज्यादा है. इसमें भी कैरेक्टर ज्यादा है. Let me just cut, paste. इफ यू कैन सी, हम डेली डंप से शुरुआत की थी. डेली डंप से हमको थोड़ा स्ट्रक्चर मिला कैसे करना है. अभी उसी डंप को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करके बोलेंगे कि उसको डिवाइड करके दे कि भाई विच नीड्स मोर एक्शंस. यू कैन जस्ट कॉपी इट फर्स्ट. यस. यस. ओके. नाउ लेट अस फोकस ऑन न्यू वर्क. यहाँ पे आ जाते हैं. Second one, split daily dump. Again, same thing I've given over here. Now I've told the AI that do not give this advice. Now your task is very simple. New work intake, loop 1, and loop 2, existing work exceptions. For each item, prepare work title, loop type, why it belongs to that loop, current status, missing information, etc., etc. Also prepare, yes, partner decision list, staff action list, high risk exceptions, and tomorrow's top 10 action list. Use only the facts given, ज़्यादा assumptions ना create करें. तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे पूरी ब्रीफ देगा ये हमको. एक क्वेश्चन मन में आता है कि is AI going to decide that we should accept the client or not? The answer is no. AI should not decide the acceptance, fee, scope, or professional responsibility. It should only prepare a structured decision brief so the partner can decide faster and better. बट इसमें डिसीजन ब्रीफ तो दिख नहीं रही है मुझे. इसमें तो दिख रहा है क्या क्या करना चाहिए. एवरीबडी आई विथ मी? तो उसके लिए हम एक और चीज करेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं. फ्रॉम अ डंप टू ऑर्गेनाइजिंग टू पार्टनर ब्रीफ, एक एक करके से आगे बढ़ेंगे हम. Then I'll get to the PPT. So we are here. Around 35, yes. Partner decision. So again, what I'll do is give AI another thing. कि भाई तू मुझे इतना सब दिया, अब तुम मुझे पार्टनर को क्या करना चाहिए ना वो बता. पार्टनर को क्या करना चाहिए वो बता भाई. अगेन सेम प्रॉम्प्ट इसको यहाँ पे देंगे. एक्ट एज अ CF. मैं आपको पहले पेस्ट कर देता हूँ.
I'll give you all the files later on when the session ends. Let us just watch the show because we are, having very limited time right now. ये prompt मैं पेस्ट कर देता हूँ फिर यहाँ पे. Third one, the work brief. Yes, here it is. यहाँ पे मैंने उसको बोला कि act as a CA firm intake coordinator. ये सब डिसाइड नहीं करने का, but prepare a partner decision brief from the rough input. रफ इनपुट मैंने एक ही दिया है उसको यहाँ पे कि भी हम क्लाइंट को मिले, उसको लोन चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए एंड डॉक्यूमेंट्स मंडे तक चाहिए, तो ये सब प्रिपेयर करके मुझे दो. ओके. अभी द प्रॉम्प्ट इज वेरी प्रैक्टिकल. इट डज नॉट आस्क एआई टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनीथिंग, nor it does not ask the AI to prepare the CMA data also. Now, this is the kind of AI usage that fits CA, real CA practice. The partner may have received the work in a meeting, phone call, or a WhatsApp message, and the coordinator or the senior staff can convert the rough note into decision brief. ये काम पार्टनर को करने की जरूरत नहीं है, बट स्टाफ ये कर सकता है ताकि वो डिसाइड कर सके भाई ये काम उनको करना. हु कॉल्स द क्लाइंट, what documents are needed, is it urgent, it should be clarified before committing or not. तो ये चीज़ों में हेल्प करता है एआई. जो रफ वर्क डंप है ना उसको डालने का वहाँ पे, तो वहाँ से आपको स्ट्रक्चर करके देगा कि कल क्या करना चाहिए. सो व्हेन यू कम टू ऑफिस द नेक्स्ट डे, द स्टाफ इज ऑलरेडी रेडी विथ ऑल द फॉर्मेट्स एंड एवरीथिंग. अगर ये यूज करेंगे तो ऐसे. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक. नाउ लेट अस लुक एट एग्जिस्टिंग वर्क. नया वर्क तो हमने देख लिया, कोई व्हाट्सएप पे कैसे करने का, बट जो एग्जिस्टिंग काम हमारी ऑफिस में है, it does not need more status updates, and most partners do not want to read 20 lines saying work is going on. उनको चाहिए कि कहाँ अटका हुआ है काम, so they can focus and expedite that process. जैसे कि क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स कहाँ पेंडिंग है, कि स्टाफ का एक्शन डिलेड क्यों है, कौन सा रिव्यू पेंडिंग है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टनर को अप्रूवल की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी डेडलाइन है जो अप्रोच कर रही है विच नीड्स मोर अटेंशन, कहाँ पे क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है. तो दिस इज एक्सेप्शन विजिबिलिटी, एंड दिस इज वेयर एआई कैन बी वेरी यूजफुल. इट कैन रीड थ्रू योर रफ अपडेट्स एंड प्रिपेयर अ शॉर्ट एक्सेप्शन समरी ऑल्सो. ये मैं रिपीट वापस नहीं करूंगा. सेम थिंग, सेम प्रॉम्प्ट डंप में से आपको निकाल के देगा भाई ये एक्सेप्शन चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए. ये मैं शेयर कर दूंगा प्रॉम्प्ट आपके साथ, बट लेट अस क्रिएट something else now. So we will just skip a few parts. This one, exception summary. आपको क्रिएट करके देखा कि आपको कल क्या करना चाहिए, तो ये वापस हम रिपीट अभी नहीं करेंगे. यस. नाउ ओवर हियर, द रीजन आई से दिस बिकॉज जब भी मैं भी ऑफिस आता हूँ मॉर्निंग को, सो व्हाट आई डू इज रीड द व्हाट्सएप मैसेजेस और उसमें से कोई एक चीज़ पकड़ता हूँ, आई डू इट, और आई हैव माई डायरी विच टेल्स मी क्या करना है. बट बिफोर कमिंग टू ऑफिस, इफ आई ऑलरेडी हैव अ प्रिपेयर्ड लिस्ट कि यही करना है, तो द टाइम गोज प्रॉपरली इन द राइट मैनर, इंस्टेड की वी आर जगलिंग अराउंड. एक डेस्क से दूसरी डेस्क में गए, इससे मिले उससे मिले, और टाइम कहाँ खत्म हो गया पता नहीं चलता. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज टुडे. नाउ डू नॉट यूज एआई टू आंसर क्वेश्चंस, यूज इट टू improve योर वर्क मूवमेंट. तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड आई रिप्लाई विथ एआई. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. उससे पूछने का कि क्या अटका हुआ है, कौन कर रहा है, क्या मिसिंग है, कौन सी चीज में रिव्यू चाहिए, व्हाट शुड मूव टुमारो. यहाँ पे एआई का यूज होना चाहिए सी ऑफिस में.
to operate better every day. Now we will take this operating model and apply it to a very specific CA workflow one by one. From rough work to ready packets. A CA firm does not need AI to magically finish work. It needs AI to reduce the time between work received, work understood, work delegated, work reviewed to work closed. This is what excuse me. This is what this block demonstrates. Now we move on from firm memory to actual execution. कैसे होना चाहिए? Some basic mistake which we do is to create a task very early. But a task little alone does not help much. जैसे check notice, prepare project report, review audit query, follow up client. ये सब work packets नहीं है, ये labels है. A work packet is different. It contains the objective, input required, missing information, firm action, and lot more on it. यहाँ पे AI काम करेगा अपने आप. Because it finishes the work professionally? No. Because it prepares the work for execution. एक सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं वो रफ वर्क को कैसे रेडी पैकेट में कन्वर्ट करता है. ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग which you can use later. Just a second. ये हम ट्राई करेंगे साथ में. We have 5 examples today, जिसमें से एक करेंगे which you can, बाकी 4 आप होमवर्क में ट्राई करना. If I can share it over here. Again इसमें लिमिट आ गई. Control X. Everybody please copy this for your reference. ये एक चीज हम करेंगे. उसके बाद I'll move on to a very interesting concept जहाँ पे हम वर्क क्लोज कर पाएंगे बहुत अच्छे से. ये मैंने रफ वर्क नोट्स दिए आपको जिसको हम रेडी पैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे. In your chat everybody. कोई भी एक वर्क फ्लो लेते हैं. ऑडियंस पोल लेना है, कौन सा करे? इनकम टैक्स नोटिस वाला ले, ऑडिट क्वेरी वाला ले, प्रोजेक्ट फाइनेंस, लिटिगेशन, क्लाइंट स्टेटस फॉलोअप. अच्छा देख क्यों नहीं रहा है? अच्छा गायब हो जाता है. प्रोजेक्ट फाइनेंस. अच्छा ओके. लिटिगेशन हियरिंग. अच्छा सी स्टैट का भी बहुत चल रहा है तो उस पर करते हैं लिटिगेशन हियरिंग. ओके. So I'll just copy this prompt, go to, okay, prompt पर डाला. I'll take the rough work of litigation. यहाँ पर rough work note में मैं paste कर देता हूँ. I've told AI that appeal hearing is next week. Assessment order and previous submissions are received. Chronology is not prepared. Some supporting invoices may be missing. Need hearing preparation? No. बाकी का prompt आप use कर सकते हो. Let's see what it gives us. एक तो मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है इनकम टैक्स का, तो ये भी एक ट्राई करते हैं. हम्म. अच्छा ऐसा रेडी पैकेट बना के मुझे दे दिया उसने. यहाँ पे मुझे वो एडवाइस नहीं दे रहा है कुछ एआई. ना मैटर डिसाइड कर रहा है ना मुझे रिप्लेस कर रहा है, बस प्रिपेयर करके दे रहा है वर्क मुझे.
So this is the realistic use of AI in a professional firm. It can reduce confusion between work which reaches the staff. It can reduce the back and forth with the client. It can reduce repeated partner follow-up. It can create clarity before execution can begin. Okay. कोई अपनी चैट शेयर करेगा उसकी भी देखते हैं चैट कहाँ गई हम्म, Amit ji request Sumi Moran to enable the setting to allow participant copy paste text from the chat window. अच्छा अच्छा नहीं करने दे रहा तो उसमें सेटिंग कहाँ पे है इसमें रिक्वेस्ट मॉडरेटर्स इसमें कोई कॉपी नहीं कर पा रहा है ऐसा लग रहा है बाकी सब तो भेज पा रहे हैं आनंद जी I'll take it up not an issue okay yeah I'll just continue last time थोड़ा कम है okay तो ये जो एग्जांपल हमने अभी लिया सेकेंड हम्म second. तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो नॉर्मली काम है ना कंप्लीट नहीं आता हमारे पास जब भी आता है का तो मैसेज में आता है कोई तो पीडीएफ आ जाती है नॉट अ क्लीन फाइल एक्चुअली एंड नॉट प्रॉपरली स्कोप्ड असाइनमेंट कैसे वो इनिशियल एंगेजमेंट जैसा होता है ऐसा नहीं होता है काम अचानक से आता है पूरा या तो कोई स्क्रीनशॉट भेज देता है और ये हम डायरेक्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं स्टाफ को कि चेक और फिर स्टाफ हमको पूछेगा भाई वेर इज द पीडीएफ असेसमेंट ईयर क्या है या तो ड्यू डेट क्या है कौन से ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है ऐसे सारे क्वेश्चन स्टाफ फिर अपने को पूछता है वो सब स्किप करने के लिए वी विल यूज एआई टू क्रिएट दिस वर्क पैकेट वहां पे ये काम आएगा द आउटपुट शुड टेल अस व्हाट इज मिसिंग व्हाट टू आस्क द क्लाइंट व्हाट स्टाफ शुड डू फर्स्ट एंड व्हाट पार्टनर मस्ट रिव्यू यहाँ पे एआई काम करेगा तो आपको जो भी रफ चीज़ है वो इस फॉर्मेट में डाल के दोगे तो यही सामने से आपको बोलेगा क्या क्या चीज़ आपको मांगनी चाहिए द वैल्यू इज नॉट इन द लैंग्वेज द वैल्यू इज इन द मीनिंग इंफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट एक्शंस मैं अपनी स्लाइड पे आ जाता हूँ नाउ काम तो बहुत सारे हैं अलग 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 कोई भी सिचुएशन ले लो बट द मूवमेंट पैटर्न इज वेरी सेम इन एवरीथिंग कि काम क्या है मिसिंग क्या है हु एक्ट्स फर्स्ट रिव्यू कौन करेगा व्हाट द क्लाइंट शुड बी टोल्ड एंड काम खत्म ये डिसाइड कौन करेगा कैसे करेगा तो दिस इज वाई वर्क फ्लो थिंकिंग अक्रॉस सी ए प्रैक्टिस नीड्स टू चेंज विद दिस एंड AI becomes very useful when it helps answer these workflow questions faster. So the next maturity step is to stop keeping prompts randomly and start building a firm level workflow template library कि एक टेम्पलेट ही बना ले अपने नाउ बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो प्रॉम्प्ट्स की पूरी लाइब्रेरी बना के रखते हैं बट prompts alone do not create firm capability हाँ no doubt a library helps one person but a template helps the firm for each work type define what questions should be asked as intake what documents are required and another questions बहुत सारे ऐसी चीज़ है but start with 5 templates not a lot of templates start with 5 templates जैसे notice का है audit queries का है project finance का है litigation का है client follow up का है this is enough to create immediate improvement now we are ready to discuss the client communication layer because even the best internal workflows fails
if the client communication remains scattered. Now, the CEO understands workflow can improve not only his firm but also his client's business. So today we have discussed how AI and workflow clarity can improve a CA firm, but there is a second opportunity also. Once you understand this inside your own firm, you can use the same thing for your clients. Now, many of your clients also facing such workflow issues which you can resolve. किसी के बिल स्कैटर्ड है, किसी का अप्रूवल वर्बल है, किसी का डेटा लेट आता है, MIS is delayed, staff sends incomplete information, owner depends on WhatsApp updates. And this is not about making your firm efficient, but it is also about helping your clients to build better finance, compliance, documentation, and a lot more things. एक बहुत ही वियर्ड एग्जांपल मैं आपको दूंगा. मैं हमारी एग्जांपल दूं विच यू कैन इजीली रिलेट टू. एज अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री और अ कंपनी, हम जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसका कुछ अपडेट आया है. एक प्राइम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो इफ यू गो टू लेट्स से हम हमारी वेबसाइट का ही एक एग्जांपल ले. दा, 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 दा. So we have created a very simple tool which helps. जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म भरा कि भी मैं CA फॉर्म हूँ. मैंने कोई भी अभी मैंने कुछ भी अभी डाल दिया समझने के लिए, कोई भी अभी नंबर डाल दिया और कोई भी फॉर्म डाल दिया. नाउ व्हाट हैपेंस इज, विजिटर ने तो अपना काम कर दिया फॉर्म डाल के, बट क्लाइंट को अगर कुछ फॉलो अप करना है, दिस इज अ वर्क फ्लो ओनली. कि क्लाइंट आ रहा है, लीड आ रही है, उसको फॉलो अप करना, कन्वर्ट करना, ये सब करना, तो ये इंस्टेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे हुआ ये कि ये जो हमने लीड क्रिएट की, अभी क्लाइंट ने एक सिस्टम, मतलब वी यूज स्लैक ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट बी यूजिंग इट. द मोमेंट यू डू दिस, एक लीड आ जाती है यहाँ पे इंस्टेंटली. तो ये जो हमने अभी किया, दिस इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ वर्क फ्लो. नॉर्मली होता ये है कि ना, यहाँ पे मेल जाता है क्लाइंट को और मेल क्लाइंट चेक नहीं करता है क्योंकि क्लाइंट का इनबॉक्स बिजी है, या तो फोन बिजी है, या तो स्टाफ छुट्टी पे है. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल विच आई एम गिविंग यू हियर, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है. अनदर वर्क फ्लो एग्जाम्पल विच यू कैन डू इट इन योर ऑफिस इज ऑल्सो, कि आप लेट्स से चैट का इम्प्रूवमेंट करवा सकते हो कहीं ना कहीं. यहाँ पे अगर थ्रू इंटीग्रेटिंग ऑफ APIs, if you understand workflows, you can understand everything better very easily. बॉट बंद रखा है अभी शायद, बट वी हैव डेवलप्ड अ बॉट ऑल्सो, जहाँ पे आप वन इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बॉट, बट अभी चल नहीं रहा है, तो बाद में दिखाऊंगा मैं ये. सो कमिंग बैक टू टू द टॉपिक, कि अगर हम वर्कफ्लोज को जान ले अच्छे से, तो क्लाइंट का वर्कफ्लोज भी हम बेटर कर सकते हैं, दैट इज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. इसमें एक चीज मैं आपको दिखा दूं. यस, यस. वो कैसे हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, वो उनकी बातों से कर सकते हैं. जैसे कोई भी क्लाइंट हमको बोलता है कि मेरा ये इश्यू है, मेरे से ये प्रॉब्लम है, मेरे कैश फ्लोज में इश्यूज है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो लिसन टू दैट वेरी केयरफुली. दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. स्पेशली जब हम पैसा मांगते हैं तो कैश क्रंच होता है उनको. तो दो सिचुएशंस आर एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको ये नहीं बोलना कि AI विल हेल्प. तो दे विल गेट एक्साइटेड फॉर द रॉन्ग रीजंस. इंस्टेड स्टार्ट विद द रियल बिजनेस प्रॉब्लम.
उसको कन्वर्ट करो, वो सिचुएशन एआई को दो, एंड एआई विल कन्वर्ट इट फॉर यू एंड गिव यू अ ब्यूटिफुल आउटपुट विच आई जस्ट शेयर इट विथ यू। एक सिचुएशन पिक करते हैं। जैसे क्लाइंट को इश्यू है जीएसटी डेटा कलेक्शन का, हमेशा उसमें लेट आता है, या तो कोई परचेज अप्रूवल और बिल कलेक्शन में इश्यू है, या तो मंथली एमआईएस क्लोजिंग में इश्यू है, या तो सेल्स इनवॉइस प्रोसेस में इश्यू है। सो व्हेन वी पिक एनी सच सिचुएशन, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी में। ओके, पिक वर्क, ओके, हाँ, ये भी मैं आपको शेयर करूंगा अभी दिखा के, बाद में प्रॉम्प्ट्स मैं आपको भेज दूंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करने का ये। This is the fifth one. Yes. Yes. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैंने उसको बहुत क्लियरली बोला है कि भाई, डू नॉट रिकमेंड एन एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, डू नॉट ओवर प्रॉमिस ऑटोमेशन, डू नॉट गिव लीगल एडवाइस और एक्सेट्रा, हेल्प मी कन्वर्ट द क्लाइंट वर्कफ्लो प्रॉब्लम इनटू एन एडवाइजरी अपॉर्चुनिटी। मान लो क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग वाला है, उसके ये सारे इश्यूज है, उसको मैंने बोल दिया प्रिपेयर अ वर्कफ्लो प्रॉब्लम इन अ सिंपल लैंग्वेज। बिजनेस इम्पैक्ट क्या है उसका, उसका सीए वर्क पे क्या इम्पैक्ट है, information documents involved, people involved at client side, current leakage points, and a lot of things. So when I give this prompt to AI, वो क्या मुझे देता है देखते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में पहले मुझे पूरा इश्यू समझा के दे देता है। अब उसका इम्पैक्ट क्लाइंट के बिजनेस पे क्या क्या हो सकता है वो मुझे बोलता है। जैसे पेमेंट रिस्क है, डुप्लीकेट या रॉन्ग पेमेंट रिस्क, वेंडर डिस्प्यूट्स एंड अदर सच इश्यूज। उसका हमारे काम पे क्या इम्पैक्ट है, जीएसटी रिव्यू पे इम्पैक्ट होगा, ऑडिट एविडेंस पे इम्पैक्ट होगा, लेजर स्क्रूटिनी पे इम्पैक्ट होगा, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व वो भी आपको बताएगा, पीपल इन्वॉल्व एट क्लाइंट साइड वो भी दिखाएगा, करंट लीकेज पॉइंट्स, सिंपल इम्प्रूव्ड वर्कफ्लो आपको बता देगा, स्टेटस फ्लो, एआई कहाँ पे हेल्प करेगा, वेयर ऑटोमेशन कैन असिस्ट, वेयर ह्यूमन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, एंड 7 डे इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दे देगा, और पॉसिबल एडवाइसरी अपॉर्चुनिटीज भी दिखा देगा आपको कि हम ये कर सकते हैं, ये आपके लिए कर सकते हैं, ये इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट शोइंग योर मेनू कार्ड, ही विल स्टार्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम इट। बट इफ यू जस्ट से इसकी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, एंड यू से कि कोई बात नहीं, वर्बली खत्म कर देंगे ये चीज़ को, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ये वहीं की वहीं रहेगी। सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू द क्लाइंट विदाउट साउंडिंग लाइक अ टेक सेल्स पर्सन, वो भी पूरा आपको करके दे देगा। We can start a 7 day pilot on a current purchase. This will reduce your follow-ups, improve document readiness, give better control over payments. पूरा बना के आपको दे देगा। So this is how you can turn workflows chaos of a client into an opportunity also. ये था एग्जाम्पल हमारा। आ गया, एक सेकंड। तो do not start by selling implementation, start by selling clarity to your clients. The first service is to diagnose the workflow. Where is the process broken, where the delay is happening, where the documents are missing, where the approvals are weak. Second is SOP and checklist setup. Third is AI assisted templates, client reminders, and a lot more things. ये 2 दिन पहले का एग्जाम्पल है। वी हैव ए क्लाइंट जो फायर सेफ्टी का काम करते हैं, द इंस्टॉलेशन एवरीवेयर, एंड ही रैंडमली वॉज टॉकिंग टू मी कि यार हम ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स सारे हैं, तो हम जगह जगह पे इंस्टॉल करते हैं, तो उसको रिफिल करना पड़ता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड वो लोग एनओसी अप्रूवल्स भी देते हैं, मतलब करवानी पड़ती है, उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है। एंड ही इज लाइक कि वी आर नॉट एबल टू कैच अप विद दोज थिंग्स, भूल जाते हैं,
डिले हो जाता है, उससे कभी कभी क्लाइंट के यहाँ पे कभी कभी बीएमसी वाले आ जाते चेक करने। सो दे वांटेड टू हैंडल दिस वेरी सिंपल सिचुएशन। अब इसमें कोई कंप्लाइंस एडवाइजरी नहीं आती। सो आई टोल्ड देम कि द प्रॉब्लम इज वेरी genuine and practical, which can be solved in a very easy manner by implementing a process। और वही चीज मैंने उसको एक फ्लो दिखाया कि इस तरीके से आप ये मतलब वर्क फ्लो में काम करो, कोई टूल दिखाया मैंने, नो डाउट। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ इट। और इतना हैप्पी कि वो बोला कि मुझे मेरा ये डिजिटाइज्ड मार्केटिंग का भी काम करना है, उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो। ये मेरा डोमेन है नहीं एक्चुअली, बट आई नो पीपल हु डू दिस एंड आई कैन बी अ मीडिएटर to help him do that। So one random chat with a client opened up many doors। किसी ने सही कहा है कि आजकल in the C industry the majority part of our revenue is advisory and doing non-traditional work compared to traditional work। So do engage with your clients in talking, random stuff about the business, their issues, and something will come up and you will know it। And yes, sell clarity। सो यहाँ पे एक चीज हम सीखने सीखने को मिलता है कि लीड विद बिजनेस पेन, डू नॉट लीड विद एआई। You can say that we are seeing repeated delays in documents, approvals, and monthly reporting. Instead of solving this every month manually, let us map one workflow once। और ऐसा प्रॉमिस करने का कि we will identify the documents get delayed, standard checklist, ये सारी चीजें हम करेंगे आपके लिए, पूरा वर्कफ्लो बना के देंगे। The goal is not to add technology, the goal is to reduce repeated follow-up, improve control, and make reporting smoother। This is a much more credible conversation which you can have। Now let us connect this back to a CA firm's own benefit। Again, a question was asked by my partner कि will clients pay for something that is also benefiting the CA firm? The answer is yes, if the client also sees business value, position it around fewer delays, better control, faster reporting, better audit readiness। तो ये सब चीजें होगी तो फर्म का बेनिफिट तो नेचुरल है, वो प्राइमरी सेलिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा। स्टार्टिंग में बिशन जी ने मुझे बोला था कि बहुत सारे वर्कफ्लो टूल्स हैं लाइक मेक, जैपियर, एंटरटेन और ये सारी चीजें, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दोज टूल्स टू अ सीए फर्म बिकॉज हम मीटिंग्स करते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते हैं, वी क्लोज द डील्स, मेजरली वी टॉक, सो आवर स्टाफ डज द वर्क। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बार बार कर सके और आसानी से कर सके, बिकॉज वी हैव अ रिपीटेड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इन आवर ऑफिस। कोई 6 महीना रहता है, कोई 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है। सो द रिपीटेड नेचर ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ लर्निंग कर्व। तो अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ना लर्निंग कर्व जितना छोटा हो उतना बेटर हो। सो आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी ट्राइड टू फॉलो इन आवर ऑफिस एंड वी फेल्ड मिजरेबली इन इट। तो आई जस्ट सेव यू द टाइम, इट माइट वर्क फॉर यू, नॉट नेसेसरी मेरे लिए काम नहीं किया तो आपके लिए नहीं करेगा। कहाँ पे है? यस, वी वी ट्राइड अ टूल कॉल्ड क्लिकअप, कि जो भी काम आता है हमारी ऑफिस में, वी ट्राई टू स्टार्ट इट ओवर हियर। ये इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। यस, अब नाउ क्लिकअप पहले बहुत बढ़िया था, बट एज डेज पास बाय और मंथ्स पास बाय इसमें फीचर्स इतने 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 आने लगे दैट वी स्टार्टेड टू कैच अप एंड इट स्टार्टेड टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसमें कुछ चीज़ करनी, कुछ चीज़ ढूंढनी, दैट वाज अ बिग पेन।
in our hands. So let's say मुझे कुछ काम करना है, let's say एडवाइजरी मीटिंग करनी है, या तो मुझे कोई जीपीसीबी लाइसेंस का काम मिला है मुझे, तो मैंने काम का नाम लिख दिया, असाइन ही ऐड कर दिया, या किसी और को ऐड कर दूं, मैं सामंत को ऐड कर दूं, गौतम, सबको ऐड कर दिया एंड क्रिएट अ टास्क. नॉर्मली पीपल लुक एट इट लाइक दिस, बट ऐसे काम नहीं होता है, क्योंकि वो काम जो मैंने ऐड किया वो कौन से फिनेंशियल ईयर का है, कौन सा ड्यू डेट का है, कौन सा पीरियड का है, कौन सी चीज का है, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट वो है ही नहीं उसमें. फिर वो कॉन्टेक्स्ट मुझे वापस उसको समझाना पड़ेगा. और ढूंढने में भी टाइम लगेगा. सिमिलरली देन वी ट्राइड नोशन. नोशन आई रियली लव इट. बहुत बढ़िया सी चीज़ है. हमने लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट स्टेटस के लिए हमने ये यूज़ किया था. लेट मी जस्ट क्लियर द ग्रुपिंग्स फर्स्ट. तो वी ट्राइड टू क्रिएट होल लिस्ट ऑफ आवर ऑडिट्स इन दिस, ताकि हमको पता चले कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर कि मैंने कितनी साइन की, गौतम ने कितनी साइन की, जल्पा ने कितनी की, या दूसरे लोगों ने कितनी की. या तो मुझे पता चले कि स्टेटस वाइज कि किसका पेंडिंग है, किसका कहाँ पे है. ग्रुप बाय साइनिंग सी है, ग्रुप बाय स्टेटस यहाँ पे है. मुझे पता चले कि कौन सा स्टार्ट नहीं हुआ है, कौन सा इन प्रोग्रेस है, कौन सा अप्रूवल पेंडिंग में है, कौन सा आईटीआर पेंडिंग है, कौन सा कंप्लीटेड है. तो इस तरीके से मुझे पता चले, एंड इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू डू आल्सो. जैसे मैंने कोई नया टास्क क्रिएट किया, लेट्स से जी स्टैट अपील फाइलिंग, और ये मैंने असाइन कर दिया, लेट्स से मेरे एक स्टाफ को, जेबा को, स्टाफ को असाइन कर दिया, और ड्यू डेट भी डालनी पड़ी. ये चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है. आप इफ यू कैन सी, साइड में ले लूँ, इसको 30 डाल देता हूँ. और भी बहुत सारी चीज़ें जो डालनी पड़ती है, बट इतनी ही मैं डालूंगा. तो ये भी यहाँ पे सेव हो जाएगा. एंड इफ आई वांट टू सर्च इट, जी स्टैट, सो आई कैन इजीली चेक इट आउट ऑल्सो ऐसे यहाँ पे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसमें एआई भी इंटीग्रेटेड है. अगर मैं नोशन में यहाँ पे पूछूं, ये एक चैट मैंने पहले की थी, मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने बोला कि भाई टास्क डन बाय ज़ैबा मुझे दिखाओ, तो उसने डन वर्ड इतना अच्छे से ले लिया ना, तो कंप्लीटेड का ले लिया उसने. ये दो चीज़ कंप्लीटेड है ना ज़ैबा की, वही दिखाई. तो मैंने बोला भाई कोई जीपीसीबी का कोई काम है वो दिखाओ मुझे. तो उसने ये बताया. अभी मैं एक सवाल एक और पूछ लेता हूँ. टास्क ऑन जी स्टैट बाय ज़ैबा. एज ए आई हैज कॉन्टेक्स्ट विथ इट, तो मुझे पूरा डिटेल यहाँ पे देगा. तो मैंने जो शुरुआत की थी स्टार्टिंग में डेली डंप की, सो डेली डंप को आप कन्वर्ट करो ऐसे स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लोज में. स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लोज में डालोगे तो एआई आपको बेटर हेल्प कर पाएगा. बट स्टिल वी फाउंड इश्यूज इन दिस होल सेटअप, क्योंकि नंबर वन द लर्निंग कर्व, द नंबर टू द स्टाफ चेंजिंग, नंबर थ्री इसमें हमको जो जिस तरीके से चाहिए हमारी ऑफिस चलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा था. बट इसकी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं. जैसे इसकी नोट्स, नोट टेकिंग. जैसे कोई भी सबमिशन का मुझे रेडी करना है, आई कैन राइट डाउन द नोट्स. ई ऑटोमेटिक ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं जिसमें एआई की ज़रूरत नहीं है, बट आई कैन इजीली मनूवर. इवन आई कैन शेयर इट माई स्टाफ एंड वर्क ऑन इट. ये कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी इसमें, बट स्टिल वी फेल्ड इन इट even after investing in it. Then we again look for more tools, which we again did a big mistake. Like Asana हमने try किया था, which looked very good, but again it failed. Direct कुछ भी click किया, appeal filing, चलो बन गया. तो खत्म नहीं हुआ. इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ड्यू डेट नहीं है, कौन काम कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी क्या है. तो ये सारी चीज़ें फिर वापस डालो, तो मैन्युअल वर्क करना पड़ रहा है हर रोज. सो दैट इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग अस. वी मूव्ड ऑन टू मेनी सच एप्स जिसमें काम करना फील लाइक द बर्डन,
एंड रेजिस्टेंस। तो करे तो क्या करे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आईसीए ने भी बहुत सारे रिकमेंड किए टूल्स हमको कि भाई ये कुछ एक टूल आईसीए का सीएमपी बेनिफिट्स में, विच यू कैन रेफर लेटर ऑन, बट स्टिल दैट आल्सो हैड अ बिग लर्निंग कर्व। We even referred to other audit tools that also had a big learning curve. So before I move ahead and show you another tool, आपके ध्यान में ऐसा कोई टूल है जो आप कर रहे हो विच इज वेरी सक्सेसफुल, जो आपके ऑफिस में काम कर रहा है, सो आई कैन ऑल्सो रेफर इट, और इफ आई रेफर्ड इट आई विल गिव यू फीडबैक ऑन इट ऑन द चैट एवरीबॉडी प्लीज। एक ये भी हमने टूल बहुत ट्राई किया था, टास्को पैड वाला, जो भी एक्सपायर हो गया है। जम्पो, यस आई हैव ट्राइड जम्पो ऑल्सो। ये ये लास्ट वीकेंड की बात है, व्हेन वी वर हैविंग दैट विकासा बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट, and my good friend Rushik was also there, and he uses Jampu a lot, and I asked him, भाई how is it going? तो he said कि सब बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा जम्पू कैसा चल रहा है? he is like कि we are not using it anymore. I said why? he said कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ईश्वर जी आपका यही फीडबैक है? and he uses some tool called Finexo या Finpro ऐसा कुछ था, तो एक टूल है from जयपुर। Anybody responses? What do you use? Acha, we also dropped out, not renewed. Acha. Oh. So Ishwarji, what are you doing? What are you using now to improve your workflow? Do you know कि एक सीए फर्म को है ना पीयर रिव्यू लेवल 4 फर्म बनना हो, so it has to follow the guidelines SQC1. I'm not able to see any reply. अच्छा अच्छा, आपको रिप्लाईज नहीं दिख रहे हैं? मुझे मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, वो ईश्वर जी ने ना सिर्फ होस्ट और पैनलिस्ट से लिखी है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। सीए प्रैक्टो, अच्छा, ये भी मैंने सुना है, थोड़ा ट्राई किया था, बट स्टिल वी हैड सम इश्यूज इन दैट आल्सो। मैं भी कुछ डिस्कस कर रहा था कहाँ पे, स्टाफ को लगा था एक रिप्लाई, स्टाफ को लगता है कि काम करे के जमको को देखे, लॉट ऑफ मैन्युअल वर्क इज देयर। अच्छा, यस आई एग्री, ट्राइड मैनी गिव अप। Many tools have been shown. Which tool are you exactly talking about? हर्षी, मैंने तो बहुत सारे टूल्स ट्राई किए, आई इन्वेस्टेड ऑल्सो अ लॉट। एक टूल जो हम अभी रेगुलरली यूज कर रहे हैं विच इज सिंप्लीफाइड, एंड अगेन व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं, एक्सेल भी यूज कर रहे हैं, नो डाउट, बट हमारा वर्क फ्लो मैनेज करने के लिए हम अभी सिंप्लीफाइड यूज कर रहे हैं विच इज वर्किंग रियली वेल। बट आई टेक सम फीडबैक्स फर्स्ट फ्रॉम अदर्स, लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको, सो आई कैन ट्राई एंड हेल्प देम। ओके, सो आई टेक 5 minutes टू शो कि एक वर्क फ्लो टूल जो हम यूज कर रहे हैं which is helping, and right now almost 100 plus users are using it, and it is working wonders right now. And some of my friends are also using CCH iForm also, which is also really good. My dear friend is also using Practive, that is also good. So how do you ensure Divya ji, you're right. VS इसमें तो है, इट्स लाइक कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा अच्छा है कि नहीं। और द पर्सन रिकमेंडिंग शुड बी रियली गुड पर्सन, जैसे माय माय कजिन फजल, जब भी वो मुझे रिकमेंड करता है कि भाई यहाँ पे खाना खाना ये चीज़ बढ़िया है, सो आई नेवर गो टू दैट रेस्टोरेंट। तो इट डिपेंड्स, आपका रेफरेंस भी कैसा है पता नहीं, जो सी एफ हम फोकस सॉफ्टवेयर बना रही है full easy हो। Let me show you one thing which we do in our setup. We have a WhatsApp group.
एवरीबडी हैज टू डू करके, और उसमें मैं डालता हूँ, मेरा पार्टनर डालता है, एंड वी सीनियर्स डू इट. कोई भी लीड्स या कुछ भी रेफरेंस से आता है, वी पुट इट इन द टू डू, बिकॉज वी डू नॉट हैव द टाइम टू क्रिएट टास्क एंड एवरीथिंग. एंड आई डोंट सजेस्ट ऑल्सो कि पार्टनर लेवल के लोग ये काम भी करें. कर सकते हैं, बट वी स्पेंड टाइम इन मीटिंग पीपल. सो द स्टाफ शुड हैव दैट लिबर्टी, द टूल्स टू डू इट वेरी इजीली, जिससे उनको बहुत इजी हो, मज़ा भी आए. वो कहते हैं ना कि इफ यू हैव द बेस्ट आर्मी बट विद द वर्स्ट टूल्स, दैट आर्मी कैन नॉट विन. बट आपकी लिमिटेड आर्मी है, बट आपके टूल्स बहुत बढ़िया है उसके हाथ में, सो यू कैन विन एनी वॉर. Let me just show you what we do over here. जैसे मान लो मुझे 3B करना है, so I can just click 3B, select the client, let's say Tesla Industries, and can just create it. Now the system is so smart enough कि financial year ले लेगा, पीरियड ले लेगा, ड्यू डेट ले लेगा, असाइनी ले लेगा. साथ साथ में आपको दूसरे लोग को ऐड करना तो वो भी ऐड कर सकते हैं. एंड यू कैन पुट अ टाइम लॉग ऑल्सो, and things happen very smoothly. But we chartered accountants love to put queries, and we have to, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे हुई वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो we need endless notes. So यहाँ पे you can put n number of notes as a bullet points, like this has notes, this has subtasks, it helps in revenue leakage. Yes, that is very a big point which most of the firm owners talk to me most often than not, कि भाई काम कर रहे हैं, पैसा इतना मिल नहीं रहा है. मैंने कहा पहले पता चल रहा है कितना मिलना चाहिए. तो दे आर लाइक प्लेइंग द अजम्पशन गेम विथ मी, इतना तो मिलना चाहिए ना. मैंने कहा बट डू यू हैव कॉन्टेक्स्ट कि एक्चुअल में इतना ही मिलना चाहिए. एंड दे आर दे आर लाइक काम तो कर रहे हैं. तो आई गिव अ सोल्यूशन टू देम, which I'll also share it with you, which I call bill flow. Now, when you do some tasks, my staff told me कि सर हम ये एक बार बार एक टास्क हम कैसे करें. आई एम फाइलिंग 50 रिटर्न्स अ मंथ, सॉरी 50 रिटर्न्स इन अ डे, और मे बी इवन मोर. जब 3B की ड्यू डेट आती है, यू डू इट, आई डू इट, मोस्ट ऑफ अस डू इट. सो दे आर लाइक कि भाई एक टास्क मैं क्रिएट कैसे करूँ. सो यस, नो डाउट रिकरिंग टास्क आते हैं सब में, बट ऐसे कुछ काम जो फ्रेश आए हैं नए अपने पास, तो आप वही सिलेक्ट कर सकते हो इजीली, लाइक 3B, और डायरेक्ट सब सिलेक्ट कर सकते हो और सबका काम बन जाएगा. देन अगेन समबडी टेल्स कि सर ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो हमें रिमाइंड करने पड़ते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को मेल भेजना पड़ता है, वो कैसे करें. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यू जस्ट सिलेक्ट दोज टास्क and a option will be there. A reminder email भेजो, a template will be there, and it will be sent from your email ID, not from the company's ये software email ID. तो आपको एक personalization भी रहेगा. तो अगेन some people से कि भाई हमारे पास वो भी टाइम नहीं है. Yes, प्रजापति जी, यश, data is definitely protected, and it is fully covered around DPDP Act in S3 bucket, वरना तो हमको इश्यू होगा. सो आई वॉज यस टेलिंग अबाउट द स्टाफ, कौन सा इश्यू था, कि हाँ कि सर हमको ये रिमाइंडर्स भेजना ये भी बहुत है ना मुश्किल लग रहा है. कैन इट बी ऑटोमेटेड. आई सेड यस, इट कैन बी ऑटोमेटेड. इसमें आपके जो भी टास्क क्रिएट हो रहे हैं उसके 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, या एक दिन पहले, यू जस्ट नीड टू सेट इट वंस एंड इट विल टेल यू, सॉरी इट विल डू इट, और आपके क्लाइंट के पास मेल पहुंच जाएगा. सम क्लाइंट केम अप of one of my friend who's in सूरत, कि क्लाइंट मेल चेक नहीं कर रहा है यार, उसको व्हाट्सएप भेज दे दो. आई सेड कि व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना इजी है, बट मेटा पैसा लेता है उसका. तो इफ़ यू आर रेडी टू इंटीग्रेट दैट, जो बिशन जी ने मुझे बोला कि इंटीग्रेशंस करे, इंटीग्रेशंस ईजी है.
बट धीमे धीमे एआई टूल्स इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं ना कि इवन द टॉप शॉट्स आर फीलिंग द हीट। एंड हमको competitive रहना है, ना कि पैसा खर्चना इतना ज़्यादा। सो ट्राई ऐसा करें कि टूल्स ऐसे यूज़ करें जिसमें कॉस्ट भी इफेक्टिव हो और हम ज़्यादा एक्सपोज भी ना हो उसमें। बट another thing which I'll show you is uh, another thing which I'll show you is, let's take an example of ये किसने लिखा, प्रजापति यश। हम यश जी का एक एग्जांपल लेते हैं। यश जी का मान लो इश्यू है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने का, मुझे कोई क्विक वे आउट दो जो मैं यूज कर सकूं। ओके, यश जी विल गिव यू अ क्विक वे आउट, जहाँ पे आप डायरेक्ट टेम्पलेट से ही सब कुछ कर सकते हो। एंड वी लव एक्सेल, तो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके टेम्पलेट में कोई इश्यूज है। इफ यू वांट टू मर्ज इट यू कैन मर्ज इट, बट नहीं, हमको तो बना नहीं है। सिस्टम सामने से बोल देगा भाई ये सारी चीजें मेरे में नहीं है, या तो है बट हमको ओवर राइट करनी है विथ समथिंग एल्स, वी कैन डू इट, ताकि मिसमैच ना हो। हम क्लाइंट में यहाँ पे हर्ष जी का बना देते हैं। सो न्यू क्लाइंट इज ऑटोमेटिकली एडेड। इसमें भी मेरा ही नाम ले लेता हूँ ताकि सिलेक्ट हो जाए। सो ऑटोमेटिकली हर्ष जी के सारे काम यहाँ पे बन गए। बट मुझे इन सब में ना ढूंढने नहीं जाना है हर्ष जी को, उसका मैं अलग से पूरा व्यू बना देता हूँ। उसको एक ना ब्लू इफेक्ट दे देता हूँ मैं, बुक जैसा। एंड लेट्स से ये डी हर्ष जी डीएससी का भी काम कर रहे हैं। और डीएससी एक ऐसा काम है जो है ना, हर बार इट्स लाइक अ पंचर इन इन योर व्हीकल, जब नहीं होना चाहिए तभी होता है। फॉर दैट वी हैव एक्सपायरी ओवर हियर विच यू कैन टेल द सिस्टम कि भाई नेक्स्ट ईयर ये चीज़ वापस होने वाली है। सो मुझे पहले से रिमाइंड करना है। और ये काम करने के लिए लेट्स से मुझे लगे 3 घंटे। ओके, और ये काम को मैं ख़त्म भी कर देता हूँ। इस डिफरेंट स्टेटसेस भी डाल सकते हैं। तो जब नेक्स्ट ईयर ही आएगा, मेरा डैशबोर्ड ही मुझे बता देगा कि डीएससी का एक काम है जो मुझे करने का है। और जैसे ही मैं वो ईयर में जाऊंगा, मेरा पूरा कैलेंडर भरा हुआ होगा यहाँ पे। सो इफ यू आर प्लानिंग अ सीजन इन एडवांस कि मेरी सीजन आने वाली है नेक्स्ट मंथ, लेट मी जस्ट चेक द कैलेंडर, ऐसे कोई रिमाइंडर्स है जो मुझे काम करने चाहिए। सो आई हायर अ पर्सन टू डू दैट, सो दैट माई एग्जिस्टिंग टीम कैन नॉट फील द लोड। और 1 साल बाद मुझे पता थोड़ी होगा किसने काम किया था, तो ये भी पता चलेगा किसने क्रिएट किया था। सो ये चीज डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वर्क फ्लोज। फिर इसके अंदर एआई बाद में इंटीग्रेट कर सकते, नो डाउट, मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वर्क फ्लोज। बट एक और चीज है कि हर्ष जी का काम किया है, मुझे सैलरीज करनी है, मुझे पैसा चाहिए, और पैसा तो क्लाइंट ही देगा। बट कितना पैसा लेना चाहिए क्लाइंट से, वो कौन डिसाइड करेगा? डेफिनेटली हम ही डिसाइड करेंगे, बट डिसाइड करने में बहुत टाइम जाता है। सो ये काम भी सिस्टम करेगा, और सिस्टम मुझे बताएगा कि ये डीएससी का काम किया है तो उसके 12,000 लेने चाहिए, या वॉट एवर जो भी अमाउंट आपने डाला हुआ है बेस्ड ऑन योर टाइम, वो कैलकुलेट करके दे देगा कि 3 घंटे का काम किया है तो 12,000 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपेक्षा है। अपेक्षा का हमने काम किया है, ऑलमोस्ट 12 काम किए हैं, इतने सारे जिसमें टाइम नहीं डाला है। बट आई समटाइम्स फॉरगेट कि कौन सा काम, कितना काम। सो आई जस्ट फिल्टर आउट कि मैंने इस साल का काम, सॉरी 26-27 का काम क्या किया है, तो 2 काम मुझे मिल गया। नाउ सिटिंग इन 26-27 मैंने 20-21 का भी काम किया है, तो वो मैं देखता हूँ ऐसा तो क्या काम किया है। अपील फाइलिंग की है, कुछ कुछ ब्लॉक क्रेडिट का नोटिस आया होगा, कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड। एंड चलो मान लो घर के लोग है, पैसा नहीं लेना, बट नॉन बिलेबल में तो डालना पड़े, ताकि पता चले कि पूरे साल में हमने कितनी फ्री की एडवाइस दी है,
ताकि नेक्स्ट टाइम हम काम करें तो वी डू हैव कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट अजम्पशंस। एंड वी आर राइट नाउ राइडिंग ऑन अजम्पशंस एवरी स्टेप ऑफ द वे। हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड में नहीं रहता है। Another thing which which I personally love is checklists. And लेट्स से मेरा स्टाफ है जिसको 3B फाइल करना आता नहीं है, ही इज अ फ्रेशर, बट ही इज वेरी साउंड इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, बट आई एम वेरी बिजी इन टेकिंग द सेशन। सो व्हाट आई विल डू इज उसको मैं असाइन कर दूंगा काम, और उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा। एंड उसको पता भी चलेगा कि भाई सर ने इसमें एक चेकलिस्ट डाली हुई है कि काम कैसे कैसे करना चाहिए। और वो उसको टिक भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। कुछ कमेंट्स हो कि अकाउंटेंट नॉट अवेलेबल, या तो दिस नीड्स अटेंशन, कोई भी पॉइंट वो आप डाल सकते हो। तो नॉर्मली हमारी ऑफिस की सिचुएशन में ऐसा होता है कि एक्सेल बनाते हैं, एसओपीज बनाते हैं, और फोल्डर में पड़ी रहती है। नेक्स्ट ईयर वापस ऑडिट आता है, एंड अगेन द सेम थिंग। बट उस 2 साल में या 1 साल में जो भी चेंजेस आने चाहिए वो आते नहीं हैं, और चेंजेस आए तो एक्सेल शीट हम भूल जाते हैं। एंड वी वांट सच एडवांस्ड अप्रोचेस आल्सो विच पीयर रिव्यू SQ7 टेल्स अस कि भाई स्ट्रक्चर्ड वे में आपका ऑडिट होना चाहिए, सो यू कैन स्ट्रक्चर योर ऑडिट द वे यू वांट। एंड चेकलिस्ट ICAI प्रोवाइड कर ही रहा है, उसमें बस आपको थोड़ा मसाला डालना है आपका खुद का। सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर ऑल्सो, बट दिस इज नॉट इनफ। दिस इज नॉट इनफ। आई want my staff to represent me, save my impression. He has to create his own and save the firm's reputation also. So वो जब भी कोई क्लाइंट के वहाँ जाएगा या ऑफिस में काम करेगा, उसके पास लिमिटेड नॉलेज है, बट जब भी वो काम करेगा तो ये सेम काम किसी और ने किया है कि नहीं किया वो भी पता होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं हर चीज़ के लिए आमिर को फ़ोन करे या गौतम को फ़ोन करे। सो हियर क्विकली कैन चेक। और मान लो शायद हिस्ट्री नहीं, ये काम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो क्लाइंट का काम भी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि क्लाइंट का और भी काम किया है, तो वो भी पता चले भाई कि हर्षी का ये सारा काम किया है। एंड इफ आई एम सिटिंग एट अ क्लाइंट्स प्लेस एंड आई एम आस्किंग द अकाउंटेंट, और मे बी द ओनर इज सिटिंग ओवर देयर, एंड इफ आई आस्क कि भाई ये डिस्कशन हुआ है रिगार्डिंग द लैंड परचेज और द अपील, कैन यू शो मी द डॉक्यूमेंट, आई नीड टू ऑडिट इट। Just imagine what kind of an impression which your staff will create to your client कि he came prepared। ऐसे ब्लाइंडली सुबह व्हाट्सएप मैसेज आया कि यहाँ ऑडिट करने जाना है, और आ नहीं गया ऐसे सीनियर के साथ। सो दीज आर द न्यूएंसेस विच वी नीड टू लुक इनटू। एंड यहीं पे ना आई वुड रिकॉल आवर सेंट्रल काउंसिल मेंबर अर्पित जी, हु टोल्ड मी कि हमको ग्रो करना है, नो डाउट, बट होता ही है कि क्लाइंट ग्रो करता है और हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव आवर डिलीवरी ऑफ सर्विस, आवर ब्रांडिंग, एंड द वे वी वर्क। तो वो होगा कैसे? बाय एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, बाय डूइंग सेम थिंग बट डिफरेंटली इन अ मच बेटर मैनर। तो उसके लिए तो एक वर्क फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, और वर्क फ्लो नहीं है तो फिर डिफिकल्ट है। एंड देर आर मेनी मोर थिंग्स विच यू कैन डू, जैसे कि मुझे मेरी ऑफिस का ही देखना है आज क्या काम हुआ है। बाय सिटिंग हियर विथ यू ओनली आई कैन जस्ट चेक कि आज के दिन में पेंडिंग काम में, आज 20, आज छुट्टी है तो, पर 27 को जैसे ही मॉडिफिकेशन किया था IEC का निशांत ने, सो आई कैन नो फ्रॉम हियर ओनली कि शिव मरीन का काम हो रहा है। वैसे ही LEI रजिस्ट्रेशन का काम। सो ऐसे ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ, एंड आई कैन पुट मल्टीपल व्यूज, जैसे ग्रुप व्यू है। आई हैव दिस वेरी notorious client who asks a very simple question every time कि मेरे कौन से फाइनेंशियल ईयर की कौन से नोटिस पेंडिंग है, क्या स्टेटस है। एंड आई हैव टू से कि देख के बताता हूँ। तो वो देख के बताता हूँ कितनी देर में होगा। सम पीपल टोल्ड मी कि उनको आधा घंटा लगता है,
Some people told me कि मेरा staff आए तो मैं बोलूँगा, मतलब this is an internal chat with them, but I told them कि this should not be the case. It should move very fast. And what if I tell you you can do it in just 5 clicks and just see कि कौन सी notice का क्या क्या status है. Once again, this is not a compliance software. This is your work clarity platform, जहाँ पे आप clarity मिलती है आपको very quickly. And another thing which I really love is, आज तो मैं ऑफिस गया नहीं हूँ. आज मेरी ऑफिस में 16 जने आए, उसमें से 15 तो लेट थे आज, और उसमें से 17 एब्सेंट है आज. शायद उसमें मेरा भी नाम है. लेट मी जस्ट मेक माई सेल्फ प्रेजेंट ओवर हियर, ताकि मेरा नाम यहाँ से निकल जाए. जस्ट रिफ्रेश इट. Here I am. I am very late. I am almost 10 hours late to the office. Oh, 8 बज गया. Okay, so we are almost to the end of this session, and there are many things which you can do. One thing which I really loved last time, जब the previous you know regional council member Vikas sir came to my office, and he said कि office में policies होना बहुत ज़रूरी है, because एक standard maintain होता है, and also it's a requirement of peer review. तो कैसे करें? और जब भी peer review होता है तो we prepare a document, get it signed, and it stays in the file and never comes back. So this was an issue which we also noticed, and no doubt WhatsApp में तो हमारे policies तो चलते ही रहते हैं कि आज ये करेंगे, ये मतलब इस तरीके से काम होना चाहिए, डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, and we forget. So what is the solution to that also? तो we made policies also. यहाँ पे जैसे टीम लीडर मीटिंग, ऑडिट की पॉलिसीज, एंड यू कैन इवन सी कितने लोगों ने साइन किया है. एंड दिस इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट बाय आईसीआई कि आपकी जो भी पॉलिसीज हो ना, आपका स्टाफ का सिग्नेचर उस पर चाहिए, टू चेक कि दे आर ऑन बोर्ड एंड दे नो इट. एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स गोइंग अराउंड इन इट, बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज ओवर हियर इज कि वर्क फ्लो होगा ना आपका ऑफिस में, तो आप शांति से सो पाओगे, नेक्स्ट डे ऑफिस आ पाओगे और ग्रो कर पाओगे. And especially those who wants to grow, they have to delegate. And if you cannot delegate, you cannot grow. And when you delegate, you need confidence also कि भाई मैंने जो काम दिया वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्लस जिसको डेलीगेट किया है उसके पास प्रॉपर टूल्स है कि नहीं जिससे वो ग्रो कर सकता है. वन प्राइम एग्जाम्पल विच आई गिव ऑफ हर्ष भाई राइट नाउ, कि उनका मैंने काम किया, अज्यूमिंग मैंने वो डेलीगेट किया ईश्वर जी को. लेट्स से मैंने ईश्वर जी को बोला यू हैंडल द वर्क ऑफ हर्ष भाई, एंड ही हैंडल्स इट, कंप्लीट्स इट. एंड व्हेन द टाइम कम्स कि जब इनवॉइस बनाना है, टैली में गए, पार्टी सिलेक्ट किया, सर्विस सिलेक्ट की, अमाउंट डालना है, आई डोंट वांट अ सिचुएशन कि ईश्वर जी मेरे को फोन करे कि आमिर भाई कितना पैसा डालू इसमें, एंड वी सिट एंड डिस्कस. व्हाट शुड हैपन इज कि ईश्वर जी शुड टेल मी कि भाई अराउंड 50,000 का बिल हो रहा है, व्हाट शुड वी डू. सो द आंसर शुड बी येस और नो. इतना क्विक होना चाहिए. एंड इफ आई आस्क कि 50 क्यों, लास्ट टाइम तो 25 का बनाया था. सो ईश्वर जी शुड ऑल्सो हैव ऑल द आंसर्स इंस्टेंटली कि दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड बिल इट फॉर 50. तो ये जो वर्क क्लैरिटी कैसे आई हमारे पास, थ्रू डूइंग दोज स्मॉल स्मॉल थिंग्स एवरी डे, एंड इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. We are almost end of the session, and before I end the session I want to take some questions from your end कि आपको कुछ issues हो जिसको शायद मैं यहाँ पे quickly solve कर सकूँ, आपका कोई workflow जो आपको manage करना है. So we can take up your questions, and then we can end the session. We have a handsome hung Piyush ji over here also. I still remember when we had that meeting in Karjat, you were gymming in the morning, and that is something which every chartered should do, focus on health also. Piyush ji, I can see you smiling. Thank you, Amir bhai.
Thank you for the appreciation. So I think let us take the questions first, then I'll take a minute to discuss the thing. I think there are no specific questions related to the topic. And the particular question is about the availability of recording of this session. So let me clarify that WRC keeps all the recordings on the channel of the YouTube channel of WRC or on the website of the WRC. So you'll definitely get the recording of this session available on the WRC website within a week, within next week, and then it will be available for us to review. Somebody asked me any workflow for mergers and acquisition. Yes, definitely. आप इसके ना कैसे इजी कर सकते हैं इसको. नंबर वन, जैसे मैंने आपको कहा, आपका ये अनस्ट्रक्चर्ड ये वर्क रफ नोट्स है, इसको आप डालो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा. फिर वर्क पैकेट्स मिलेगा, एंड देन यू नो हाउ टू डू इट स्टेप वाइज. एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए एक चेकलिस्ट भी आईसीए ने दी हुई है. इफ वी जस्ट फॉलो दैट तो भी आपका इजीली हो जाएगा. बट लेट मी टेल यू वंस अगेन अरुण जी, it's not a one day process, it's a multi-day or a week process या months process also. So to keep a track कि ये काम के लिए कितने सारे काम आपने किए, you need to have a workflow. वो आपको मैनेज करना पड़ेगा. फिर आपको 4 महीने या 6 महीने बाद आप बिल बनाओगे, तो you need to know what activities your staff did or you did. क्योंकि पाइल अप होना बहुत ईजी है. स्टार्टिंग में बहुत कम दिखेगा, बट एज डेज पास बाय वो इतना पाइल अप हो जाएगा, you'll go crazy. And you'll waste a Sunday with your partners sitting and checking कि भाई किस किस का बिल बनाना है, क्या करना है, and that situation will definitely come. And then you'll contact WRC members कि भी क्या use करें, and they'll recommend something from the CMP benefits. I have a plan to create tax audit using vibe coding in Power Apps. Vibe coding is really good. मैं खुद use करता हूँ, but these are tools which you can play around with. I don't know if you can work around with, क्योंकि it's like having that kick for a moment which kicks you back after a few weeks. How can I एक कुछ बनाना है यार दोस्त, उसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि let's take an example of a building or a house or any room or office also. कुछ अच्छा बनाना है, उसमें टाइम तो लगेगा. इंस्टेंटली एड्स बनती है जो रील्स में कन्वर्ट होती है, एंड वी समटाइम्स फॉल फॉर इट. Like not only time, but as per my experience, because I am also trying to develop something for my client or in my office as well. So whatever we try with the first plan, no, we like create first workflow or something like that. कि इसमें से हम सॉफ्टवेयर में से ऐसे जाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे. But when we complete that, then we realize कि नहीं, इसमें थोड़ा सा इसमें change करना पड़ेगा. So that is how we have to rework also on whenever we create anything for a software or for workflows for the software. So that is how, like as you rightly said, कि घर बनाने जैसा है. घर का इंटीरियर बार बार हम चेंज करते हैं, कई बार हम कलर चेंज करते हैं, कई बार कुछ चीजें चेंज करते हैं. दैट इज हाउ ये सॉफ्टवेयर में भी होता है. इट इज नेवर सर्टन, नेवर स्टेबल अनलेस एंड अनटिल वी हैव टू स्टेबलाइज आवरसेल्फ दैट यहाँ तक ही रुकेंगे और इसमें काम करेंगे. So Yes. I think all the questions are over now, right? Yes, I think if you want to connect with me, I'm sharing on the screen a QR. You can contact me on LinkedIn and we'll Yes, stay in your touch. QR is visible And on the screen. thank you once again to the whole WRC team, Fenil Bhai, Saurabh ji, Piyush ji, Rakesh ji, Bishan ji. Without your support, this wouldn't have been possible. And Harsh ji, who is patiently listening to us. I hope you have a good dinner, and the So weekend is also coming ahead. formal vote of thanks. I'll just like to take a minute. As Aamir Bhai was mentioning about exercising, when we met before 4 years at the Karzat, when we were having the meeting of managing committee members at WRC level, and I was the treasurer at that time.
So, Yes, sir. Aamir bhai, fortunately, our institute has started a new committee named as Promoting Work and Life Balance among Chartered Accountants. And again, fortunately, I was the first founder chairman of that committee at WRC level. And this year also, I am like leading that committee. And yeah, last year also and this year also, we are following a countdown by doing Surya Namaskars. This countdown is leading to the Yoga Day, International Yoga Day. As we all know, that yoga is a treasure. Yoga is a culture which is given by India to the world at large. And that is how to proudly follow this culture. We are trying that our chartered accountant should develop the habit of doing something in yoga. And that is how we have chosen Surya Namaskar being one of the best asan, one of the best exercise in yoga, which can be done by chartered accountants and the CS students. And we are trying to build a habit by doing additional Surya Namaskar every day. So we started this countdown for this year on World Health Day, that was the 7th of April. And we are doing it one additional Surya Namaskar in a way. Right now, today is the 51st day. Today also I did 51 Surya Namaskar. And many of the friends are doing it. And we are trying, we are like keeping our videos on the Instagram also so that we can motivate other chartered accountants to do that. So you as a CA colleague, you can also try. You can also start from today also. And you can try build up a habit of doing Surya Namaskars every day. You can just stop at 12 and do continue to continually on a continuous basis 12 Surya Namaskar daily. And we can celebrate Yoga Day by doing maximum number of chartered doing Surya Namaskars at a time. So with this, I am thankful for this opportunity, Aamir bhai and Harsh bhai, and over to you now, Harsh bhai, for the formal of thanks. Yes, sir. Actually, I have been doing 108 Namaskars every day Great, since a great, year. great. Yeah, so now I will deliver the vote of thanks. As we come to the end of this insightful webinar on From Workful Chaos to AI Clarity, it is my proud privilege to propose the word of thanks. On behalf of WIRC of ICAI, I express my sincere gratitude to our esteemed speaker, CA Aamir Dholia sir, for sharing such practical and thought-provoking insights on the use of AI and automation in the profession of chartered accountancy. Your session has truly helped us understand how technology can be adopted without compromising professional judgment, confidentiality, and control. The example of McDonald that you gave, we will definitely integrate it in our office and we will make our workflow like that only. I extend heartfelt thanks to the chairman of WRC, CA Saurabh Ajbera sir, Vice Chairman CA Rikin Patel sir, Secretary CA Bishan Shah sir, Treasurer CA Rakesh Shah sir, CA Dr. Fenil Shah sir, Chairman AI in WRC, and CA Piyush Chandak sir, Vice Chairman AI in WRC, for their vision, guidance, and continuous efforts in organizing such relevant knowledge initiatives for the fraternity. We also thank all our event partners for their valuable support in making this webinar successful. A special word of appreciation to the entire organizing team, technical team, and volunteers working behind the scenes for ensuring smooth execution of today's program. Most importantly, I thank all the participants who joined us today and made this session interactive and meaningful through their enthusiastic presence. We hope this webinar inspires all of us to embrace technology responsibly and transfer challenges into opportunities in our professional journey. Thanks you once again to everyone. Stay safe, stay updated, and have a wonderful evening ahead. So, Harsh bhai, we will connect for this Surya Namaskar activity once, huh? Definitely, Yes, sir. we can connect tomorrow only directly. Yes. आमिर भाई आप भी शुरू कर दो. यस सर, जिम तो जाता हूँ आपको देख के, ये भी शुरू कर दूंगा. Great, great, great. ओके सर, थैंक यू सर. मिलते हैं. Bye bye. ओके सर.